ट्यूटर ऑफ हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है जियोग्राफी का चैप्टर 2। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा टॉपिक है आज वो हम कवर करने वाले हैं सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड द डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुलर प्लेटो एंड द हिमालयन माउंटेन। मतलब जो चैप्टर 2 है वो बहुत ही छोटा पार्ट में डिवाइडेड है और उसमें ज़्यादातर पार्ट हमारे सिलेबस भी नहीं है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द आर्ट, so let's see. Please do subscribe to my channel for further updates. So जियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी एक साइंस है, एक विज्ञान है ऑफ अर्थ क्रस्ट। ऑफ अर्थ क्रस्ट you have read about the mantle, crust, the core center means the core surrounding circle of the earth where different parts are remaining, and the historical geology is the historical study of earth which studies the pattern and development of crust of time and space. Historical geology is the historical study. Historical geology क्या है? Historical पढ़ाई है, historical study है of earth and of earth which is with its pattern and developments with time and space. मतलब टाइम एंड स्पेस के साथ उसके डेवलपमेंट, उसके पैटर्न को समझना, उसके बारे में रिसर्च करना, वही है हिस्टोरिकल जियोलॉजी. एराज आर द प्राइमरी इंटरवल्स ऑफ टाइम, पीरियड्स आर सेकेंडरी इंटरवल्स. प्राइमरी इंटरवल्स व्हाट? एरा, एंड सेकेंडरी इंटरवल आर पीरियड्स. ग्रुप इज द नेम गिवन टू रॉक्स ड्यूरिंग एन एरा. ग्रुप आगे के दिन में जो रॉक्स का नाम दिया जाता था वो उसका नाम है ग्रुप. सिस्टम इज द नेम गिवन टू रॉक्स फॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड. सिस्टम किसको बोला जाता है? जो नेम गिवन टू द रॉक्स फॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड. मतलब सिस्टम किसका नाम दिया गया? जो रॉक फॉर्म हुआ, जो रॉक तैयार हुआ उस एरा में, उस टाइम में, उस पीरियड में. स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल एरा. स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल एरा वी हैव द 4 स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल एरा. द नेम आर प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड द सेनोजोइक. तो उसका टाइम आप पढ़ लीजिएगा कब से कब तक है. जैसे कि प्री कैम्ब्रियन है ओवर 570 मिलियन ईयर्स एगो. पैलियोजोइक है ओवर 245 टू 570 मिलियन ईयर्स एगो. Paleozoic is 240 to 570 million years ago, and Mesozoic is 66 to 245 million years ago, and Cenozoic is 66 years old to the present. मतलब सबसे लास्ट से सबसे फर्स्ट तक जो सबसे रिसेंट है वो है Cenozoic. So Indian geological eras also have the 4 different parts, that is the Archean, which is also known as the early Precambrian, the Purana, the late Precambrian, the Dravidian over 400 to 570 million years ago, and the Aryan over 400 million years ago old to the present. The Precambrian derives its name from the rock formation of Cambodia, Latin name for Wales in United Kingdom. The period got their names from places where rock formation of that period were formed. मतलब पीरियड को कैसे नाम मिला? जब वहाँ पर जो रॉक फॉर्मेशन होता था, वहाँ पर जो रॉक तैयार होता था, फ्रॉम दैट पीरियड were formed. The Precambrian do not contain fossil of plants and animals. Precambrian को मतलब Precambrian doesn't contain any fossils of plants and animals. The Paleozoic have the fossils of early lives. The Mesozoic have middle lives and Cenozoic have recent life. What I have told कि Cenozoic सबसे recent है, Paleozoic late Precambrian, Paleozoic have fossils of very early lives, and the Mesozoic have middle class. मतलब Mesozoic है बीच के, मतलब बीच वाला. Geological history. So the main geological history have been divided into 3 parts of our country: the peninsular plateaus, the Himalayan mountains, and the Indo-Gangetic plains. Between the two above, Indo-Gangetic plains between Himalayan mountain ranges and peninsular plateaus. So what have been told in the peninsular plateau region? So we have come up with our first topic of our class, some basic definition we have read. You please note down the definition for better knowledge. And geological history, now we'll come with the geological history. So in the peninsular plateau, मतलब Indo-Gangetic plains between Himalayan mountain ranges and the peninsular plateau. So what are told about the peninsular plateau? The southern part of India consists of an old plateau which is known as the southern plateau. Southern part of India को consist of old plateau, बहुत ही पुराना एक plateau था जिसको हम southern plateau बोलते हैं. This is also called the peninsular plateau. It is also called peninsular plateau because it is surrounded by sea on all 3 sides of the several all 3 sides. मतलब इसके जो 3 जो साइड है, पहला मतलब जो इसका 3 साइड है वो सराउंडेड बाय सी. Geologists believe that it is the oldest landform of Indian subcontinent and just one of the several plates of Earth's crust. It is known as the Indian plate. During the Precambrian era, there is a large depression in which sediment was deposited and a block of crystal rocks known as tableland. Block of crystal rocks have
known as the Peninsular Plateau came out of this depression and never submerged again. मतलब जियोलॉजिस्ट बिलीव करते थे कि जो ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इट इज़ द वन दैट इज़ अ लार्ज डिप्रेशन, मतलब वहाँ पर एक बहुत बड़ा डीप डिप्रेशन है, मतलब एक डाउनफॉल है, इन विच सेडिमेंट वॉज डिपोजिट, जहाँ पर सेडिमेंट डिपोजिट होता था, इकट्ठा होता था, एंड ए ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल रॉक्स को क्या बोला जाता था, एज द पेनिनसुलर केम आउट ऑफ डिप्रेशन एंड नेवर सबमर्ज्ड अगेन, मतलब ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल रॉक को ही बोला जाता था पेनिनसुलर, जो कभी सबमर्ज हुआ ही नहीं उसके बाद. Tableland has behaved as a rigid and flexible block throughout its geological history and is often compared to horst. So tableland मतलब प्लेटू कैसे बिहेव करता है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल ब्लॉक थ्रू आउट इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री. तो इसको कंपेयर किया जाता है डेक्कन प्लेटू से. हॉर्स मतलब डेक्कन प्लेटू. So it considered as a part of Indo-Australian plate which has been subjected to vertical movement and block faulting. ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ भी इसको कंसिडर किया गया, जो वर्टिकल मूवमेंट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या करता है, वर्टिकल मूवमेंट एंड ब्लॉक फॉल्टिंग. So coming on to the next topic, the Himalayas. The Himalayan mountain ranges are much younger as compared to peninsular mountain ranges. मतलब Himalayan mountain ranges recently तैयार हुआ, मतलब not recently, मतलब ये सबसे लास्ट में तैयार हुआ, और पेनिनसुलर प्लेटू उससे भी आगे. And it is also called the Youngfold Mountains. Till Mesozoic era, about 70 million years ago, the entire Himalayan area as well as the plain area remained under seawater as a geoscline of entire Himalayan of the Tethys Sea. Mesozoic era, which was about 70 million years ago, the entire Himalayan area as well as the plain area remained under seawater. मतलब जो मेसोजोइक एरा था अबाउट 70 मिलियन ईयर्स एगो, द इंटर हिमालयन एरिया एज वेल एज द प्लेन वो कहाँ पर था, अंडर द सी वाटर, इन अ जियोसिंक्लाइन ऑफ टेथस सी एज सेडिमेंट्स. To the north and south of Tethys Sea were the landmass of Angaraland and Gondwanaland respectively. As a result, of north drift of the peninsular plateau is a last stage of mountain building process. The sediments of Tethys Sea were folded and present Himalayas were formed. मतलब इसके बाद में क्या हुआ, एक नॉर्थ ड्रिफ्ट हुआ पेनिनसुलर प्लेटो का इन द लास्ट स्टेज में, वेयर द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हैव टेक प्लेस, जहाँ से माउंटेन तैयार होना शुरू हुआ. सेडिमेंट्स ऑफ द टेथस सी गॉट फोल्डेड एंड प्रेजेंटेड हिमालयस आर फॉर्म, वैसे ही हिमालय तैयार हुआ. सो द नेक्स्ट पैरा इज द वेरी इंपॉर्टेंट. वी लर्न अबाउट द what was been told about the plate tectonic theory of the formation of the Himalayas. सॉरी दोस्तों, करंट जा रहा है और आ रहा है, तो हम पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं. According to the plate tectonic theory, the Himalayan mountain building process is now better explained with the help of theory of plate tectonics. Himalayan mountain building process after the plate tectonic theory have been betterly explained. This theory has replaced the former geosyncline theory of mountain building. Collision of resulting in folding, faulting, and the igneous activity. So what has been told here, the collision of the plates, मतलब प्लेट्स जब एक दूसरे के साथ जब फ्रिक्शन होता है, जब कोलाइड होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग एंड इग्नियस एक्टिविटी टेक्स प्लेस, एंड प्लेट्स लीड्स टू बिल्डिंग ऑफ ट्रेसेस विद द प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव. मतलब कॉन्टिनेंटल रॉक्स भी रहते हैं, स्ट्रेस बिल्ड होता है प्लेट्स के बिटवीन, एंड उसके as a result, folding, faulting, and igneous activity takes place. According to plate tectonic theory, the Himalayan mountain ranges were formed when the Indian plate was driven northward and pushed beneath the Eurasian plate. With the advance of the Indian plate towards the north, the Tethys Sea started contracting about 65 to 70 million years ago, and about 30 to 60 million years ago, the two plates came closer and the Tethys Sea began to fracture into thrust edges. About 20 to 30 million years ago, the Himalayan ranges started come out. So अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये आपको समझना पड़ेगा और आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो करंट आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स कंटिन्यू. सो अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बताएगा कि हिमालयन रेंजेस वर फॉर्म्ड व्हेन इंडियन प्लेट ड्रिवन टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स, जब नॉर्थवर्ड्स वर ड्रिफ्ट हो गया प्लेट,
एंड पुश्ड बीनीथ द यूरेशियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट को भी वो जाकर कोलाइड हुआ. विद द एडवांस ऑफ द इंडियन प्लेट टुवर्ड्स द नॉर्थ, जब इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ और आगे बढ़ता गया, द टेथस सी स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग. टेथस सी क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ अबाउट 65 to 70 million years ago, and about 30 to 60 million years ago the two plates came closer and the टेथस सी crust began to fracture. मतलब टेथस सी का जो क्रस्ट था, जब वो दोनों क्लोज आए और टेथस सी का जब क्रस्ट था वो फ्रैक्चर में डिवाइड होना शुरू हुआ, और फिर अबाउट 20 to 30 million years ago the Himalayan ranges came out. So moving on to the next topic, the Great Plain. So we'll also learn the difference between the Peninsular Plateau and the Himalayan ranges, the Himalayan mountains. The Great Plain. In between the Himalayas in the north and Peninsula in the south lies a Great Plain of India. In between the Himalayas in the north, the Peninsular Plateau in the south lies the Great Plain of India. मतलब जो Himalayas mountain है in the north, the Peninsular Plateau in the south, वहाँ पर क्या रहता है, उसके बीच में ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया. इट इज बिलीव दैट देयर वाज अ लार्ज डिप्रेशन caused due to Himalayan uplift of the Tethys and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau. It is believed that वहाँ पर एक लार्ज डिप्रेशन था, एक लो एरिया था, उसके वजह से क्या हुआ, ड्यू टू हिमालयन अपलिफ्ट ऑफ द टेथस सी एंड सब्सिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक द पेनिनसुलर प्लेटो. मतलब हिमालयन माउंटेन रेंजेस अपलिफ्ट हुआ ड्यू टू टेथस सी, एंड नॉर्दर्न फ्लैंक की वजह से पेनिनसुलर प्लेटो सब्सिडेंस हुआ. River flowing into the depression from a lofty mountains to the north and plateau of the south deposited sediment in the depression, and in course of time it is turned into a flatland of alluvial deposits. मतलब जो हिमालयन जो है, rivers flowing into the depression from lofty mountains of the north of the Himalayas, मतलब lofty mountains of the north का जो हिमालय है वहाँ पर, वहाँ से जो रिवर इमर्ज होता है, और जो प्लेटो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट में, वहाँ पर जो सेडिमेंट डिपोजिट होता है डिप्रेशन में, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम इट वाज कन्वर्टेड इनटू फ्लैट लैंड एंड of alluvial deposits. The regular extension of Sundarban Delta indicates the process of plain formation of still continuing. मतलब वहाँ पर क्या हुआ, रेगुलर एक्सटेंशन के वजह से सुंदरबन डेल्टा सुंदरबन डेल्टा has been converted and indicated as a plain formation which has been continued. The next and the last topic of our class. So the difference between the peninsular plateau and the Himalayan mountain. So we have covered the second one. We have covered the first and the second, and we'll continue with the third. The difference between the peninsular plateau and the Himalayan mountain. So there were some terms we need to familiar with. The peninsular and the Himalayan mountains are quite different from each other in respect of stratigraphy, geological structure, and physiography. So what is stratigraphy? Stratigraphy is the lithological study of rock bed, sequence of their occurrences and their thickness and age. Stratigraphy means lithological study, मतलब जो हम रिसर्च करते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, रॉक बेड्स ऑफ द रॉक, एज वी हैव हर्ड अबाउट इट, सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंसेस, कैसे वो फॉर्मेशन हुआ, उसका सीक्वेंस क्या था, उसका थिकनेस क्या था, उसका टाइम कितने टाइम से वहां पर रहा था, उसका एज कितना है, वो सब. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज द स्टडी ऑफ फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स इंक्लूडिंग इग्नियस एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, स्टडी ऑफ फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स इंक्लूडिंग इग्नियस एक्टिविटीज व्हिच इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन. मतलब फोल्ड और फॉल्ट्स जो होता है इंक्लूडिंग द इग्नियस एक्टिविटीज which is associated with its formation, जो फॉर्म होने में उसको हेल्प किया. और व्हाट इज द फिजियोग्राफी, इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेस फीचर ऑफ लाइक लैंड, माउंटेन, प्लेटोज एंड प्लेन्स. फिजियोग्राफी मतलब, फिजियोग्राफी से हम समझ सकते हैं फिजियोग्राफी मतलब क्या, उसका जो फर्स्ट वर्ड है फिजियो मतलब फिजिकल. फिजिकल मतलब क्या है, माउंटेन, प्लेन्स, रिवर बेड्स एटसेट्रा. river beds, mountain plateaus, plains, etc. So it is a study of the formation, कैसे form हुआ, कैसे develop हुआ, वही है, ये सब ही है. Formation and study and development of how it was been formed into a feature of land like mountain, plains, plateaus, etc. So what is the basic difference between Himalayan mountain and the peninsular plateau? Peninsular plateau is the old landmass of hard rocks, and Himalayan mountain is the new fold of new rocks, soft rocks, young mountain of soft rocks, और वो old landmass of hard rocks. Peninsular plateau is the tableland which is often compared to a horse, as we have read earlier, and it is a chain of fold mountain formed due to tectonic uplift. और हिमालयन क्या है, मतलब chain of fold mountains which are formed due to tectonic uplift, जो uplift होता है. It remained a land area since the Cambrian period. Only for a short period, its coastal areas were submerged beneath the sea. It remained a land area. Land area रहा था peninsular plateau कब तक?
जब तक कैम्ब्रियन पीरियड ना आए, only for a short period of time it was converted into coastal areas where submerged beneath the sea. तभी एक short time के लिए वो converted into a coastal areas which was submerged under the sea. As compared to Himalayan mountain ranges remain underwater for a long period of time in the history. As we have read it, Himalayan mountain बहुत दिनों तक sea के अंदर ही रहा, right for the Cambrian period to its formation into mountains. कब तक Cambrian period तक, जब Cambrian period के बाद वो mountain में emerge होना शुरू हुआ. Peninsular mountains, residual mountains, the Aravallis are the best example. Peninsular में क्या है? Residual mountains, Aravallis are the Aravalli mountain range is the best example. Himalayas are young, weak and flexible and have suffered from folding and determination. क्योंकि हिमालय soft है, young है, इसलिए वो fold भी होता है. And deformation. River valleys are shallow with low gradients in peninsular plateaus, and the Himalayas are tectonic mountains, and the rivers are torrential, having marks of youthfulness. मतलब हिमालयन रिवर्स में क्या है? youthfulness है, एक youngness है, एक नया चीज है कुछ रिवर्स में. और peninsular plateau में as usual river valleys are shallow with low gradients. Gradients बहुत कम है. Peninsular plateau is a triangular shape. Himalayan mountain range shape is arc shaped. मतलब arc मतलब जो हु जो है हमारा जियो जियो मतलब जो जियो है, स्टडी ऑफ जियोग्राफी, दैट इज द आर्ट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसकी तरफ है आर्क शेप. आर्क शेप तो आपको पता ही होगा. और मोस्ट ऑफ द रॉक्स फाउंड इन पेनिनसुलर प्लेटो आर इग्नियस, और हिमालयन प्लेटो में सेडिमेंटरी रॉक्स मिलता है. पेनिनसुलर प्लेटो में इग्नियस और हिमालयन माउंटेन रेंज में सेडिमेंटरी. So the next part we no need to study the next part because it was not included in our syllabus. So you can study the table 2.1 of the major geological formations of India, the Aryan, the Dravidian, the Purana, which was we have covered in our class today, but here it was given in a form of gist, so where you can easily study it from here. The standard geological eras and period we will only study the Cenozoic quantity, about the Aryan, the recent Pleistocene, the Tertiary, the Mesozoic, what happened, Paleozoic, Precambrian, only this. And no need to study the rest, the duration of period, the age from the beginning, no need to study that. So, we have completed our chapter today and the last topic, question answers of the examination of chapter 1. So, please go to the chapter 1. So, let's start. The first question is the short answer type question. Compare the extent and area of China of that of India. So what we have to compare the latitudinal and longitudinal extent of China with India. So what is the latitudinal extent of India with China? Means we have to tell the latitudinal and longitudinal extent of China and area, और इंडिया का भी बताना पड़ेगा. वो इजीली आपका वो जो टेबल जो समरी ऑफ कंपैरिजन है उस पे इजीली दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं इजीली. 8 degree 4 minute north latitude to 37 degree 6 minute north latitude. It's India. Latitudinal x or longitudinal x is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitude. और चाइना का क्या है? 18 degree to 54 degree north latitude and 74 degree to 135 degree east longitude. वो latitude था, ये longitude. और एरिया कितना है इंडिया का? 32,87,782 square kilometer, and China 95,97,000 square kilometer. So, and China is about 3 times the area of India, 3 times bigger the area of India. Mention one similarity and one difference between India and Australia with respect to their extent and area. Latitudinal and longitudinal extent and Tropic of Cancer. क्या है डिफरेंस? क्या है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में डिफरेंस है? Tropic of Cancer divides India into 2 parts. Tropic of Capricorn divides Australia into 2 parts, as we have read. So that's the end of our class 2. So if you like my video, please click the thumbnail, and that's all for today. Please do subscribe to my channel for further updates, and please share it with your friends who need it.